Today we will learn about rivers. What is a river? A river is a moving body of fresh water or a stream of fresh water that move downslope from a hill or mountain is known as a river. सो रिवर क्या है? एक मूविंग बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर जो किसी माउंटेन से स्टार्ट होता है और डाउन स्लोप की तरफ मूव करता है किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. दिस इज नोन एज अ रिवर. एंड रिवर are of two types: seasonal and all year round rivers. The river that flow all year round are known as permanent rivers. For example, Indus River in Pakistan. But some are seasonal rivers that only flow during rainy season or when there is a flood. These are known as seasonal rivers. For example, some rivers in Balochistan that only flow during the rainy seasons. So what is a river system? From source to the sea, all the process or all the area drained by a river is known as a river system. From source to sea or ocean, whole area covered by river from a river system form a river system, are also called drainage basin. A river system is made up of these components. So what is a river system? जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ ये जाके अपने से बड़ी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ओशन और सी में, वहाँ तक जितना भी एरिया रिवर कवर करता है या ड्रेन करता है उस एरिया को रिवर सिस्टम या ड्रेनेज बेसन कहा जाता है. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं द एरिया covered by or drained by a river is known as a drainage basin. And now the components of a river system or components of drainage basin are, first of all, source, then stream, tributaries, mouth, and distributaries. So a river has 5 components, or a drainage basin has 5 components. You can see the rivers start from a source. Uh, the source can be the overflow of a lake or melting of snow, or it may be a spring from a mountain. And the stream is the main flow of the river. Then confluence, a point where the small stream join a large stream, meander, the ups and downs of rivers. And then it divide in 3 different stages: upper, middle, and lower stages. Now we will discuss the components of river in detail. First of all, what is the source? All river has a starting point where water begins its flow. The source is called a headwater. The headwater can come from rainfall or snow melt in mountains, but it can also bubble up from groundwater or from form at the edge of a lake or large pond. वो जगह जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है उसको उसका सोर्स पॉइंट कहा जाता है या फिर रिवर सोर्स कहा जाता है. और ये मोस्टली ये एक हाई प्लेस होती है, माउंटेन या हिल्स होती हैं, और वहाँ या तो ग्लेशियर के मेल्ट होने से या लेक के ओवरफ्लो होने से या किसी स्प्रिंग के ओवरफ्लो होने से ये रिवर स्टार्ट होता है. बट ऑब्वियसली किसी भी ग्लेशियर में या किसी एक लेक में इतना पानी नहीं होता कि इतने बड़े एरिया को कवर किया जाए. जैसे हमारा इंडस रिवर 2900 किलोमीटर के एरिया को जब कवर करता है तो किसी एक स्ट्रीम में या किसी एक लेक में इतना पानी नहीं है. ऑब्वियसली इसमें और भी सोर्सेज शामिल होते रहते हैं जो इसके अंदर वाटर फ्लो को बढ़ाते रहते हैं. देन अ स्ट्रीम, द फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर दैट इज स्मॉलर देन अ रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, क्रीक और ब्रूक. अब जो छोटी छोटी स्ट्रीम डिफरेंट एरिया से, ड्रेनेज बेसिन में डिफरेंट एरिया से, जो कि आप हाइड्रोलॉजिक साइकिल में भी पढ़ चुके हैं कि रन ऑफ होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रन ऑफ, द small stream that join a large stream are known as streams. You can see a rill or a gully used to flow the water is known as a stream. Then tributaries. A tributary is a small stream that join a larger stream or main stem river or a lake.
वो छोटी छोटी सी स्ट्रीम जो कि डिफरेंट एरिया से फ्लो करके आती हैं और आके एक बड़े रिवर के साथ मर्ज हो जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. देन माउथ, द अदर एंड ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ. फर्स्ट एंड जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो इसका सोर्स है, तो अदर एंड जहाँ जाके ये रिवर ओशन या सी में मर्ज हो रहा है उसको माउथ कहा जाता है. Where water empties into a large body of water such as a lake or ocean. Then distributaries. Distributary channel is a stream that branches off and flow away from a mainstream channel. Distributaries are a common feature of river deltas. लास्ट स्टेज पे जब रिवर डिवाइड होता है, खुद को डिवाइड करता है इन स्मॉल स्ट्रीम्स, these small streams are known as distributaries. Now you can see in this diagram, first of all the source is a spring, then you can see the tributaries, the smaller streams that join the river from different places. Then confluence is the place where the stream join the main river, and then at the last stage when the river divide in small channels, these are known as delta. And this whole area from the source to the ocean is known as drainage basin. The water that flows in river is fresh, meaning that it contains less than 1% salt. Collectively, scientists estimate that all the rivers in the world carry 3.6 billion metric ton, 4 billion tons of salt from land to the ocean each year. मीन रिवर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, बट ओशन या सी को सॉल्टी करने का रीज़न यही रिवर्स होते हैं. बट चूँकि रिवर में अमाउंट कम होती है, बट जब ये ओशन या सी में जाके कलेक्टिवली ज्वाइन करते हैं उसको, तो वहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीज हो जाती है. बट ये सॉल्ट जो भी है ये रिवर ही अपने साथ लेके आ रहे होते हैं जब वो अर्थ सरफेस या रन ऑफ कर रहे होते हैं वहाँ से, या अर्थ सरफेस के ऊपर से डिफरेंट सॉल्ट्स को साथ लेके फ्लो करते हैं. Now, drainage basin. Whole area drained by a river is called drainage basin. And watershed. Watershed is an area of land that drains or sheds water into a specific water body. Every body of water has a watershed. Mean watershed is the area in which water flows. So, now we will discuss river course. When river moves from the source to the ocean or sea, it is divided in 3 stages. The course of a river is the route that river takes. There are 3 parts of the river. नहीं whole journey जो river कर रहा है अपने source से लेके ocean या sea तक पहुंचने में, इसको divide किया जाता है 3 parts में, जिसको course कहा जाता है. upper course, middle course and lower course. अब upper course को आप इसकी यंग स्टेज कह सकते हैं, या आप इसको दरिया का बचपन कह सकते हैं. द रिवर इज अ नैरो एंड देयर इज लेस वाटर, इट फ्लो वेरी क्विकली. जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, वो बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो सो अपर कोर्स भी एक रिवर के बचपन का स्टेज है जिसमें इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये बहुत क्विकली फ्लो कर रहा होता है. देन द मिडल कोर्स, आप इसको मेच्योर स्टेज भी कह सकते हैं, जहाँ रिवर वाइड हो जाता है, इसमें वाटर इंक्रीज हो जाता है और इसकी स्पीड उतनी तेज़ नहीं रहती. क्यों? इसलिए कि अब ये कंपैरेटिवली प्लेन एरिया पे पहुंच चुका होता है. दैट्स वाई इसकी स्पीड स्लो हो चुकी होती है. एंड द लोअर कोर्स, इसको आप रिवर की ओल्ड स्टेज भी कह सकते हैं. जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी एनर्जी कम हो गई होती है, तो ये रिवर का वो स्टेज है जहाँ रिवर के अंदर बहुत कम एनर्जी रह गई होती है और ये बहुत स्लोली फ्लो करता है. और यहाँ ये बहुत वाइड हो चुका होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, सो इट फ्लोज वेरी स्लोली. So river course is all the route that a river takes from the source to the sea is known as a river course, and it is divided into 3 parts: upper course, middle course and lower course. In upper course, V-shaped valleys are formed. In a middle course, U-shaped valleys are formed, and on lower course, delta is formed.
Main courses of a river: upper course, middle course, and lower course. And now you can see the changes. In upper course, V-shaped valley is formed. In middle course, the valley became wide and it make a U-shaped. And then fluvial deposition are on lower course. The deposition start. It is known as floodplain zone. Middle course is known as transition zone, and upper course is known as source zone. Now we will discuss Indus River in Pakistan. Indus River is the longest and most important river in Pakistan, and it originates in Tibetan Plateau from the Lake Mansarovar. It runs a course through Jammu and Kashmir and merges into Arabian Sea near Karachi. So the source is Tibetan Plateau and the mouth is Arabian Sea near Karachi. It travels a total length of 3,200 kilometers. It is fed by melting of snow in upper course. So water source is melting of snow. Tributaries that join Indus River are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. The Indus River provides key water resource for economy. Punjab means land of 5 rivers, and Punjab is known as bread basket of Pakistan because it provides most of agricultural products of Pakistan. Now we will discuss water cycle. Water goes round and round, and this process is called water cycle. Or water change its states from liquid to gaseous form, then turn into clouds, and then again reach to the earth in the form of rain, snow. Uh, and this process continuous is a continuous process. That's why it is known as water cycle. In water cycle, the components of a water cycle are evaporation. When water is heated and turned into water vapor, this process is called evaporation. Then condensation. When water vapor cool and condense and they form cloud, this process is known as condensation. Transpiration. Plants release water vapors and air in atmosphere. This is called transpiration. And precipitation. Water that fall to the earth in any form is called precipitation. For example, rain, snow and hail. But the first is precipitation. The water cycle start from precipitation, and the main energy source is sun. You do not learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over. Thank you.